Welcome to this Wednesday's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार, साथ ही उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर ए.के. भट्टाचार्य। भट्टाचार्य जी नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत। नमस्कार। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है अर्जुन चौधरी। Domestic stocks witness marginal gains amid positive global cues. Sensex closes above 58,350 points. Nifty settles above 17,350 level. Rupee weakens to 79 rupees and 16 paise against the US dollar. And Brent crude oil prices rise to $102 per barrel mark. सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में मामूली बढ़त दर्ज। सेंसेक्स 58,350 और निफ्टी 17,350 के स्तर से ऊपर हुए बंद। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होकर $79.16 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $102 प्रति बैरल के आसपास बनी रहीं। बात सबसे पहले शेयर बाजार की। वैश्विक शेयर बाजारों से सकारात्मक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज हुई। सेंसेक्स 58,350 से ऊपर, जबकि निफ्टी 17,350 के स्तर से ऊपर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.37% की वृद्धि से 214 अंक बढ़कर 58,351 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.25% की तेजी से 43 अंक ऊपर 17,388 पर पहुंच गया। व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.6%, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.28% के नुकसान में रहे। Sensex and Nifty today witnessed modest gains. Both stock indices added marginally amid positive cues from the global share markets. Sensex finished above 58,350 points, while Nifty settled above 17,380 level. Sensex rose 214 points to finish at 58,351. Nifty also added 43 points to end at 17,388. In the broader market at the BSE, the mid-cap index fell by 0.6%, while the small-cap index ended 0.28% down. In the Sensex pack, 18 companies posted gains, while 12 logged losses. Tech Mahindra was the top gainer as it climbed 2%, followed by TCS, which gained 1.5%. Infosys added 1.4%. On the other hand, Maruti tumbled 2.3%, Sun Pharmacy declined by 2.2%, while Kotak Mahindra Bank fell 1.8%. In sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 16 sectors gained while 3 witnessed losses. IT index gained 1.3% and the tech sector climbed 1.1%. On the other side, telecom sector lost the most as it fell 1.3%. Auto and capital goods, both indices declined by 0.8%. Let's have a look at how the rupee performed today. जी, रुपए के प्रदर्शन पर नजर डालें तो अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 45 पैसे कमजोर होकर $79.16 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में 0.15% की गिरावट से 106 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। भट्टाचार्य जी, सबसे पहले बात शेयर बाजार की करें तो देखा जाए तो जून का जो निचला स्तर था उससे करीब 13% की अभी तक शेयर बाजारों में बढ़ोतरी दर्ज हो चुकी है। और अब जो ये तेजी हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से जो तेजी लौटी है बाजार में, बाजार कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आगे की दिशा और दशा तय करेंगे बाजार की आपको? देखिए, जो मार्केट में इस वक्त जो भी परिवर्तन या ट्रेंड परिवर्तन में दिखा है, वो मैं समझता हूं थोड़े बहुत ग्लोबल फैक्टर्स हैं और थोड़े बहुत डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं। अगर आप ग्लोबल फैक्टर्स को देखेंगे तो ग्लोबल फैक्टर्स में जो क्रूड ऑयल प्राइस की जो ओवरऑल जो एक ट्रेजेक्टरी जो थी, दिशा जो थी, उस दिशा में अब ये साफ मालूम हो रहा है कि पहले जो डर ये था कि क्रूड ऑयल प्राइसेस दाम बढ़ी जाएंगी, उसका वो डर में थोड़ी बहुत कमी आई है,
स्टेबलाइज कर रही है क्रूड ऑयल प्राइस। और दूसरी जो बहुत बड़ी बात जो मार्केट को समझ में अब आ चुकी है और वो है कि रशियन क्रूड ऑयल जो अगर जो इंडिया क्रूड बास्केट क्रूड प्राइस से करीबन 10 से 12% नीचे से आयात हो रहा है रशिया के क्रूड, और उसकी जो शेयर है इंडियन क्रूड ऑयल में वो करीबन 20% आ चुकी है ऑलरेडी। तो जो ओवरऑल जो क्रूड ऑयल प्राइस का जो इम्पैक्ट जो है जो मार्केट को ये दिख रहा है कि उतना ज्यादा नहीं होगा। ये पहली बात जो है वैश्विक तरह से। और सेकेंड जो वर्ल्ड जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव जो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो है कि जो ग्रोथ का जो पर्सपेक्टिव जो एक शॉक आने की जो डर था कि ग्लोबल जो इंडिया का ग्रोथ जो है वो शायद नीचे जाएगा, पर जो रिसेंट IMF की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भी कहा गया है कि 7.4% की वृद्धि दर रहेगी और अगले साल भी थोड़ी कम होगी पर उतनी कम नहीं होगी। तो ये दो वैश्विक डेवलपमेंट हैं। और जो डोमेस्टिक डेवलपमेंट जो है मैं उसमें ये कहूंगा कि जो पॉलिसी रिफॉर्म की जो एक दिशा दिख रही है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में एक्ट में, और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर एक्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की जो रिफॉर्म में है, मैं समझता हूं 2-3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज की भी मार्केट में अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक देखते हैं, जैसे अदानी एंटरप्राइजेज के स्टॉक में उछाल आया है। उसका सिंपल कारण ये है कि जो डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जो रिफॉर्म से सारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को एंटरप्राइज जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में है उनको एक बहुत बड़ा अच्छा एक वो मिलेगा। उसी तरह जो एविएशन सेक्टर में जो स्पाइस जेट के बारे में बात चल रही है कि किस तरह से उनकी ओनरशिप चेंज आ सकती है, उससे जो इन्वेस्टर्स जो हैं वो काफी उत्फुल्ल हो गए हैं और उसका भी दाम बढ़ गया है। तो ये 2-3 जो सेक्टरल जो स्टॉक्स जो हैं उसमें भी एक उछाल की नजर आ रही है। तो मैं समझता हूं कि सामग्रिक रूप से आप देखें तो डोमेस्टिक सेक्टर का जो ओवरऑल असेसमेंट जो है वो उतना अब नेगेटिव जो 3 हफ्ते पहले 4 हफ्ते पहले था वो नहीं है। आगे की अगर आप देखें तो 2 चीज मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट निर्णायक होगी। वो 5 अगस्त में जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू की बैठक होगी, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रेपो रेट की जो दिशा वो किस तरफ जाती है, 30% बीपीएस से इंक्रीज होता है या 50 बीपीएस से होता है। और दूसरी इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी। इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी अगर कंट्रोल में आ गई, जो बहुत लोग आशा कर रहे हैं शायद कंट्रोल में आ चुकी है, अगर वो कंट्रोल में आ गई मैं समझता हूं कि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रेपो रेट का जो स्टांस रहेगा वो एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहेगा। Well, AKB, you've given us a mix, the reasons why the bull market is continuing and the market went up by 214 points despite a fall in the US stock market this morning, in fact, and it will reopen once again while this program is on. And you mentioned about the Fed Reserves. They have increased the discount rate by 225 basis points. It's 2.5% now. And Jerome Powell has now indicated that they may raise it by another 100 basis points. So RBI will follow that particular trend. Why is it that the hedge funds are still bullish based on what's happening in the US? Because they borrow funds at a lower rate. But if the rate is going up, how is it that they're still bullish into buying into our markets? $1 billion in the last 4 sessions. And will that continue? Why is it that they're pumping in so much? The duality of the Indian market and the US market is a very, very important factor here. The duality is that at a time when the US, the foreign portfolio investors find operating in the US markets less attractive than the Indian market, which is providing the better returns, arbitrage. So which is the reason why you are seeing that for the last 6 days consecutively you have seen an increased flow of FPI investments at a time when
with each passing day, you are seeing the Indian various trade data is showing that the domestic demand is still on the rise. If you look at the July trade data, you will see that non-gold and non-oil imports have continued to grow at a healthy rate. So what it shows is that the domestic demand recovery is still at work. And this is what the US investors are seeing. And if you look at the various profit earnings estimates of various companies going forward, I think the buoyancy in the foreign portfolio investments in India can be understood from that context. So specifically chemicals, electronic goods and rice has seen an incremental rise in exports. जी, आईटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो आज 1.3% का इसमें हम गेन देख रहे हैं, लाभ देख रहे हैं, और आईटी कंपनी के शेयरों में तेजी आज देखी गई है। जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, खासतौर पर जो पूरी दुनिया में जो बात कही जा रही है कि एक मंदी की आहट है, खासतौर पर विकसित देशों में, और जिस तरीके से रुपए में जो एक थोड़ा सा हम देख रहे हैं कमजोरी दिखाई पड़ रही डॉलर के मुकाबले, तो आने वाले 6 महीने हम बात करें तो आईटी सेक्टर में आप किस तरह की संभावनाएं देखते हैं और निवेशकों को क्या सतर्कता बरतनी चाहिए इसको लेकर के कुछ? आईटी सेक्टर में दो चीज बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज हमें नोट करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो रुपए की जो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन दोनों का जो आप देखें कि पिछले कई दिनों में रुपी एप्रिशिएट कर गई है, आज थोड़ी नीचे गिरी है, पर पिछले 3 दिनों में वो 80 से 78 में आ गई थी। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो भारत की जो डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमी की रुपी की स्टेबिलिटी की ओर पॉइंट करता है। और दूसरी तरफ जो इंडियन आईटी सेक्टर की जो डिमांड सिचुएशन जो है, अगर आप रुपी डिप्रिशिएट करता है, अगर 80, 78, 79 और अगर 79 में भी रहता है, 78 में भी रहता है, वो कंपेयर टू 3 महीने पहले ये अभी भी उसका डिप्रिशिएशन है, तो उसकी रुपी अर्निंग्स में काफी एक पॉजिटिव फैक्टर होता है। और दूसरी बात जो है कि ओवरऑल अगर आप जो ऑर्डर बुक पोजीशन आईटी सेक्टर में देखेंगे, रिसेशन के फेयर्स के बावजूद आईटी सेक्टर की जो ऑर्डर बुक पोजीशन है वो बहुत कंफर्टेबल है, और उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि मार्केट एक पॉजिटिव सिग्नल डाल रही है। अगर आप उनकी अर्निंग्स ग्रोथ देखें, उसमें भी ऐसा कोई ज्यादा एडवर्स इंपैक्ट इस बार भी नहीं आया है। जी, और वापस अगर हम घरेलू अर्थव्यवस्था की बात करें तो अभी जो कल ही आंकड़े आए हैं, खासतौर पर आयात निर्यात से जुड़े हुए, उससे ये पता चल रहा है कि व्यापार घाटे में मतलब बढ़ोतरी हो रही है। तो ये जो बढ़ता हुआ व्यापार घाटा है, ये सरकार के लिए एक, आपको लगता है कि एक बड़ी चुनौती बन रहा है धीरे धीरे? चुनौती बढ़ रहा है एक तरह से। वो चुनौती है कि किस तरह से वो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। लेटेस्ट एस्टिमेट जो आ रही है वो करंट अकाउंट डेफिसिट शायद 3.9% जीडीपी की बढ़ सकती है। अगर वो 4% में छूजे, मैं समझता हूं कि एक सिग्नल जो होगा मार्केट के लिए भी, उसमें जरा सबको समझ के और सूझबूझ से काम लेना होगा। तो पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू, आरबीआई की पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा। पर उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किस लिए ये जो ट्रेड घाटा क्यों हो रहा है। ट्रेड घाटा ज्यादातर हो रहा है क्योंकि एक्सपोर्ट्स, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट्स वो कम हो गई हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट टैक्स लग गए हैं। तो उससे एक्सपोर्ट्स में एक थोड़ा बहुत झटका पहुंचा है। पर इंपोर्ट जो है, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स इंपोर्ट है या आप जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स की इंपोर्ट है, उसमें कोई कमी नजर नहीं आई है। इसका मतलब डोमेस्टिक डिमांड और डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी में अभी तक जो गति जो है
वो अभी भी उसमें तेजी बरकरार बनी हुई है. ठीक. We'll be heading for a short commercial break. We will be back with more on Market Mantra. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी. आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से. लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान. अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग. डायल कीजिए 870-001-4242. नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242. Welcome back to Market Mantra. We were discussing about market performance with our expert on the program, Shri A.K. Bhattacharya, whom we call fondly AKB. AKB, once again, a warm welcome to you on the program. Thank you. You mentioned about the FII, FPI interest in our market, especially in the last 4 trading sessions, which has sustained this bull run. And their investment has been focused on the banking and the auto sector. The reasons why, even though in today's trade, both Bank Nifty and auto actually fell marginally, not by much, but marginally. That how is it that the fund managers are so bullish on bank and auto? Banks is very, very easily understandable because Indian banking has used the COVID situation very judiciously, efficiently and effectively. What they have done is that they have cleaned up their balance sheet in a big way, and today the Indian banks' total net NPA levels are at almost record low levels. That is number one. Almost every other bank, particularly the private sector banks, have seen a consolidation in their net income margin levels. And number three, that even some of the better public sector banks have turned in better performances, cleaning up of their non-performing assets. So therefore, the financial sector, which is if I may use the word, in the pink of its health, and the credit growth is going up as a result of the banks looking for more lending avenues, that has given the broad cheer to the banking sector, which is why the foreign portfolio investors are targeting the banking sector in a big way. The other sector that you refer to, the auto sector, is not probably a reflection of the current situation in the market, but looking at the future, the direction that some of the key auto players in the country have the moves they have taken in their jump to the EV segment. Also, please remember that a company like the Mahindras have seen huge demand surge in their new vehicles that they are launching. In the 1 hour of the opening of the bookings, there was a huge booking of the SUV. So the demand side, there is no reason for any complaint from the auto players. So both the EV sector play as well as no let-up in demand has actually boosted sentiment of FPI as far as the auto sector is concerned. The only area where the auto sector is not revving up as the others are is the two-wheeler sector. So if you permit me, what is happening in the auto sector in the K shape, the upper leg of the K, which is the big vehicles, the SUVs, the commercial vehicles, the tractors in the rural market, they are doing very well. But it is the lower K, lower leg of the K, which is the two-wheelers, the scooters, they are not doing well. So I think the foreign portfolio investors are focusing more on that upper leg of the K, which is consisting of the EV segments, of the tractors, the commercial vehicles, and the SUVs, and the sedan passenger vehicles, which are doing relatively well, and demand is not seeing any let-up right now. So very briefly, what's your take on next week's trading performance? I was of the view that this week probably would see some profit booking.
the markets, if you will note that today had begun rather weakly, and actually had begun with the markets getting into the red zone, but there was this flow of money coming in, and some of the key sectors like the banking and the IT sector kept the index afloat, and it is in the green zone. My reading is that a lot will depend on what the RBI does on Friday. If the RBI's rate hike decision is closer to 50 BPS points, probably the markets will react for some time a little adversely, because that will immediately mean that there is a liquidity shortage, a liquidity crunch, and that will impact the market. But I don't see that sentiment to remain valid for long, because FPIs will once again make a comeback to the Indian market from the current situation, the trend that you see. जी, रुक करते हैं वैश्विक शेयर बाजारों का। अमेरिका के निचले सदन प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे और केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावनाओं के चलते वैश्विक शेयर बाजारों में आज कारोबार मिला जुला रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स को छोड़कर एशियाई शेयर बाजारों में आज हल्की तेजी रही। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.9% का उछाल आया और जापान का निकेई 0.5% की बढ़त में रहा। हांगकांग का हैंगसेंग और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स दोनों 0.4% की बढ़त में रहे। हालांकि चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.7% के नुकसान में रहा। यूरोपीय शेयर बाजारों में अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान मिला जुला रुख देखने को मिला। लंदन का FTSE 100 0.1%, फ्रांस का कैक 0.3% और जर्मनी का डेक्स 0.2% की मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। Moving on to the U.S. stock market, U.S. stocks ended a volatile session with losses yesterday. The three major stock indices fell as risk appetite was dampened by economic uncertainties and escalating U.S.-China tensions. The Dow Jones Industrial Average Index plunged 1.2%, the S&P 500 fell 0.7%, and the Nasdaq Composite Index ended 0.2% down. Now, AKB... globally, Asian and the North American markets are jittery because of Nancy Pelosi's visit to Taiwan and China conducting military exercises at this particular opportune time. What's the likely impact on the U.S. economy, or for that matter, the Asian economy? The U.S. economy right now has inflation figures of 9.1% for the month of July, I believe. Are they facing inflation which is supply side or demand side? And where does China come into it? And how do you see this affecting the U.S. economy? The U.S. economy is very clear that there is more money in the market, and that money has to be sucked out, and which is what the Fed Reserve is doing by either raising the interest rates or by flushing out liquidity through increased, reduced bond buying program. But the event to which you referred, which is the visit of Nancy Pelosi to Taiwan, I think will cast its influence on both the American markets as well as the Chinese market. As you would know, that the Chinese market has already reacted, and they were not doing well among all the Asian markets. They did well, but the Chinese market did not do very well. I think in the immediate term analysis, both the Chinese markets and the US markets will be very keenly watching the developments on this front, how the Chinese react, and what steps the US will take. Remember that this is only the first phase. If anything happens, then US will not be an idle spectator. So both the markets and both the economies will be very keenly watching this theater very, very closely. Having said that, the long-term picture is something that one should not lose sight of, is the play of the huge military industry complex that US right now situates in its own country. Now, if any tension, any conflict, it also indirectly means more business,
more opportunities for the huge military index complex, just as the Russia-Ukraine war did benefit that military industry complex. While the stock market will not immediately react to that possible potential long-term gain, if I may use the word, but currently I think the markets will remain nervous, particularly in the US and the Chinese zones. Do you see supplies being affected? I don't think the supplies will be affected at this point in time. As a matter of fact, if supplies are affected, then for Mr. Jeremy Powell, the challenges will multiply manifold. जी भट्टाचार्य जी, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अगर ये तनाव बढ़ता है और तो क्या एशिया की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, एशियाई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन पर भी आप कुछ इसका असर देखते हैं? देखिए, इसका एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि भारत क्वाड का मेंबर है. अगर चाइना को अमेरिका ये नैन्सी पेलोसी के विजिट से कॉर्नर कर दे, अगर चाइना रिएक्ट करना चाहे तो शायद वो डायरेक्ट रिएक्ट ना करके बाकी दो एशियाई जो क्वाड मेंबर हैं, वो जापान और भारत की और कोई कुछ छोटी मोटी काम कर दे, तो मैं समझता हूं उस तरह से एशियन सिचुएशन को भी हमें करीब से देखना पड़ेगा और उसकी एशियन सिचुएशन रीजन को भी थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है. और मेरी समझ में ये एशिया सिचुएशन में ये यूएस चाइना का टेंशन किस तरह से प्रभाव डालता है, ये पॉलिसी मेकर्स, स्ट्रैटेजिक थिंकर्स बहुत क्लोजली करीब से देख रहे हैं इसको. Let's have a look at the oil market. Now, oil prices today inched up, erasing earlier losses as OPEC plus producer group has set for a small output increase of 100,000 barrels per day, dashing U.S. hopes of a meaningful supply boost. Crude prices gained more than 1.5%. Brent crude was trading near $102 per barrel, while WTI crude prices were at $96.30 per barrel. Looking at the actions or the lack of action by OPEC plus producer group, it appears that they want oil prices to be in the $100 range, whereas developing economies like India want it at $70 per barrel. How do you strike a compromise, and will prices be somewhere in between? I don't see prices coming down very significantly from the current levels in the immediate next few months. Because we have not yet seen the Russia-Ukraine conflict anywhere near it. Although there are easing of tension of some saying like in the wheat shipments may start very soon. But on the crude oil front, I don't see any immediate relief from that perspective. और बात अब सोने की कीमतों की कर लेते हैं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार में सोना आज 140 रुपए महंगा होकर 51,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. सितंबर अनुबंध वाली चांदी भी 145 रुपए मजबूत होकर 57,730 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी. उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,781.40, जबकि चांदी $20 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी. भट्टाचार्य जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और इतनी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद. नमस्कार. And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks witnessed marginal gains amid positive global cues. Sensex closes about 58,350 points. Nifty settles about 17,380 level. Rupee weakens to 79 rupees and 16 paise against the US dollar. And Brent crude prices rise to $102 per barrel mark. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.